previous questions. Everyone must have already started, preparing for those questions. Anyway, okay. So again, today's let's quickly make this session more interactive. Okay. So there are a couple of topics that I'm going to take you through quickly. Definitely, it is not practically possible for us to go in detail, but yes, these are the major concepts that most of the questions would be asked in the interview based on this topic. So let's quickly discuss about a mutual fund. Can somebody help me understand what is a mutual fund quickly? Mutual fund, guys. It's a pool of Mutual. it's a pool of Mm-hmm. money where the financial institutions pull the money from the investors or the public, and they go and invest in stock markets or any other funds. Okay, great, good. Anybody else? Mutual funds are basically managed portfolio built from pooled funds with the goal of achieving returns through diversification. And these are Excellent. Hmm. Good. um, Go ahead. these are available for daily trading for public, Mm-hmm. Great. Excellent. unlike unlike hedge funds. Mm-hmm. Okay. Um, and the Excellent. Mm-hmm. return is Okay. fixed. Return is fixed. Okay. But how much it is? When we are saying that the return is fixed, how much how much it is? Uh, I think here risk is uncertain, right? Like it depends. Right. Right. Yeah. So you cannot predict. It is a kind of, you are investing into directly, indirectly into the market, right? So it completely depends upon which instruments you are investing into. It is completely depend upon the risk appetite of the investor. If they want to invest into that, we'll discuss quickly. Move ahead and see that. Okay. So what is a mutual fund? So mutual fund works by pooling money from the multiple investors and then investing it into amongst the different securities. So basically what happens, the investor means anybody. So what is the basic amount that, how much is the amount that basic amount that you can invest into mutual fund? Uh, Maybe it starts from 500 or 5,000. 500 rupees. Yeah, starting from the 500 rupees as a systematic investment plan, SIP. If you want Yeah, to invest into SIP, that will, you'll have to invest, you'll have to start investing 500 rupees minimum. Okay. And in the multiples of 500, that there is no limit. So then as per your risk appetite, you will select which portfolio you want to invest into. But yes, there is a complete transparency in the uh, mutual fund, because as per SEBI's guideline, right? They have to protect the interest of the investors, right? So, in order to protect the interest of the investor, mutual fund houses should disclose all the portfolios. I mean, where they are going to invest into, how much risk is involved, right? So, they have to disclose everything in their prospects, and on the basis of that, the investor will decide in which instrument they want to invest into. That will quickly see that. So, basically, what happens? uh, the investors invest into money, into mutual fund, and then mutual fund houses will create a portfolio and invest into different instrument, equity, bonds, gold, money market instrument, and other security, right? So this is how the basic money market, mutual fund works, right? Then this is how the entire structure works. So investor pool their money. Pool their money means multiple investors are investing into particular fund. So that fund, that investable capital now will be collected together by the fund manager, and he will take the decision in which portfolio he wants to invest into, right? So investor will, then the fund manager will decide where to invest, and then that will be invested into particular security, that those securities are mutual for just like we saw, equities, bonds, gold, market, money market instruments. So that could be anything, right? Once that is invested into particular security, then that generates a corpus, right? That will generate some profit. Then the fund manager will deduct some administrative fees, then their expenses and all their fees,
right? Their salary compensation, right? And whatever the remaining, that portion will be passed on to the investor. So this is how the cycle works, right? So anybody has any question as far as mutual funds concept? I know that nowadays it is a boom topic, so everybody knows it. But anybody has any question on this particular topic, and do you want me to discuss in detail? Yeah, can I go for a question? One question. Yes, please. Yeah, we usually, we being an investor, we Hmm. get, one of the financial institutions come to us and like advertise that okay, there is a mutual fund. If you invest something, you will get some amount of return. But yeah, we do as an investor, we just go on the trust the financial institution and we invest our money. But at the end of the day, the thing is, I just wanted to know, we being an investor, do we get to know who is the fund manager, who's managing the entire portfolio of ours? Do we get to know Yes, yes, anything? absolutely. Yes, yes, absolutely. And that's the reason I told you, right, initially, that SEBI has clearly stated that you have to completely mention or there should be complete transparency in your portfolio, right? So everybody, investors should know before investing where they want to, where they are going to invest into. So there will be prospects will be provided to the investor. The investor has to go through that prospect, and as per that he will take the decision. So for example, I will there are a couple of things that we need to, you know uh, we cannot discuss here because we due to time limitation. But see here, so first of all, even in if you read the prospects of the mutual fund, you will get something like this. Okay, so how much percentage will be there in the equity, how much percentage would be there in the debt, how much would be in the gold, how much in the cash, right? So based on that, right, so see, if your majority of portion is lying in equity, then there will be aggressive portfolio, that is called aggressive portfolio, because higher the risk, higher the returns. But if your portfolio is still towards debt side, you can see here the contribution in the equity is less now and more into debt. So debt, we have a secured fund, right, as compared to equity, and that is the reason the the returns will be moderate now. And if you have a conservative approach, I mean, you don't want to go more on the equities, and even you want to secure on the cash side, right? So you will have conservative approach. That means you don't want to take more risk, as well as you will get a limited or conservative returns. Are you getting me? Yes, sir. Yeah, So yeah. this is the so this kind of opportunity will be provided in your portfolio. So you, being the investor, you will decide in which portfolio do you want to invest into as per your own risk appetite. Getting me? Yeah, Ye- that point is very clear. I know, Okay. like we being an investor, Mhm. we should be knowing where our money is getting invested. Right. Whether Now you will. Yeah, I got your point, and I'll quickly go to your another point. Let me just share my screen. Just a second. So basically, I know that everybody knows how how the mutual fund works, and how the mutual what is the mutual fund. But now the problem here is that most of the people, they don't know what is the structure of the mutual fund. So let me just talk to you regarding that structure of the mutual fund. Just a second. Are you guys able to see my screen?
It's visible, but not in proper way. Okay, just a second. Sir, I just wanted to confirm, are we going to have these notes? Just a second. I think you will get that on the portal basically. Hmm? Okay. Now, so you guys must have given access by Shivraj sir on that particular application, right? So you will get. Now the point here is that, guys, trust me, there is a, due to this knowledge zenith world, you will get everything on the YouTube, on the, on the Google, everywhere. But the point here is that you need to know how and what is exactly necessary to, necessary for you to succeed. So just pay attention for the next 10 minutes, how exactly the mutual fund works, in the back end. Just let's understand it. Okay, so we just saw about the investor. They goes to AMC, asset management company. Asset management company invest into various instruments, right? And then that return will be generated, and that return, after deducting their administrative expenses, that return will be passed on to the investors. That's what we saw just now. But we should also know what exactly happens in the mutual fund in the back end. Okay, so let's see. Important thing that somebody was asking, can we do we know who is the, who is the Fund manager, fund manager. fund manager, then the custodian, then trustee. See, so now we will just go through how the exactly the mutual fund structure works in India basically, and it across the globe. But the terminology will be little bit here and there. See, so सबसे पहले कौन आएगा? Sponsor. Sponsor means the responsible to float the mutual fund has to put 40% of net worth to set up the mutual fund. Means who will be the sponsor? The sponsor could be any bank, financial institutions. They have a good financial records in the past couple of years. So why do they need good financial position or net worth? Because the only institution who is in a position to, because any which ways that sponsor, whoever is the sponsor, I mean it could be bank or financial institution. आज की तारीख में देखा रहेगा आपने, एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड रहेगा, आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक का म्यूचुअल फंड रहेगा, एचडीएफसी, एसबीआई, then on the other hand side you can see Birla, है ना? So these are the big institutions. They have a financial background, good financial background, and then only they will be in a position to get a license to as a sponsor to start their mutual fund. Okay, so sponsor, and then there will be trustee, so responsible to regulate the mutual fund. So what happens, as I said, the big financial institution, just like bank and financial institution, they can start their mutual fund. But what is the guarantee? Because they have a diversified portfolios, right? They have a multiple businesses. What is the guarantee that tomorrow ICICI bank cannot utilize that fund in their own subsidiaries or in their own business? So in order to protect the fund or interest of the the investor, SEBI has a set guidelines. So they have to appoint the trustee. So trustee is a one kind of the board, bank, or that is going to protect the funds or assets of the. So they will basically make sure that all the rules and regulations are followed or policies are followed. Everything is as per the compliance. So that will be taken care by the trustee. Now, whatever in the mutual fund, what type of instruments do you purchase, guys? Bonds, equity, right? Yes. Yeah. Right. So if you are purchasing any asset or securities, how are you going to keep it? These investment managers or the this mutual fund houses, they are not, they can't keep their clients cash and assets in their own account. So they have to appoint the agent bank, and that is we called a custodian. But in Indian market, we normally called as a depository participants, right? DPs. But at the same point in time, the trustee will appoint the AMC, asset management company, and that's where we have the fund managers, right? Investment manager, who actually
takes the decision of buying and selling of the security, which security needs to be purchased, sold, right? So that kind of decisions would be made by the asset management company. That's where the fund houses or fund managers are based out. Are you guys getting me? Yes. Okay. So now, once this asset management company or a fund manager makes the decision where to what type of security needs to be purchased, then that security will be safeguarded with the custodian. At the same point in time, this asset management company will appoint RTA. Okay, RTA का मतलब क्या है? What is the full form of RTA? Rating agencies. Hmm? Risk Rating agencies. No, guys. Have you heard about registrar and transfer agent? Acha, Yes, okay. sir. These are, Zerodha, they are called as intermediary, right? sir. Sorry. Zerodha. Register and transfer agency, they are called as intermediary, right? Yes, so they are going to make the Uh, records of the all, Transfer because agency. yeah, transfer agency and the registrar. So for example, unless and until you know which security, I mean which type of which security have you purchased, so you can simply take example, guys. If you have a Motilal account with the broker Motilal Oswal, you will go to the counter, you will open the account. Now, who is going to maintain that record? Okay, how much you have done the subscription, how much you have done the redemption, right? You will get the statements. All these things will not be maintained by the AMC. That will be taken care by the transfer agent. Are you guys getting me? Yes. Yes. Okay, so they are going to maintain the records, and whenever you're requesting your statements and all, those are provided by the RTA. Those are not provided by the AMCs. Are you guys getting me? Yes. Everyone. So you should know what is the structure, how exactly happens, what exactly happens in the back end in the mutual fund. So the sponsor, then trustee, then because they will appoint custodian, asset management company, that's where the fund manager, lies, and then the RTN transfer agent. Again, we can see here. Okay, so I will give you the quick example of there are a couple of things that we need to skip here, but just to give you example, somebody asked that how would we come to know if there who is the fund manager. Now see here, guys. Sponsor, let's say ABSL mutual fund or Axis Bank mutual fund, for that matter, just an example. If the Axis Bank mutual fund, who is the sponsor? Axis Bank Limited. So bank is the sponsor who is going to initiate this mutual fund, right? So they will have around 40% of their own stake. Now the remaining, then once the Axis Bank identifies as a sponsor, they wants to establish mutual fund, then they'll have to appoint the trustee. Okay, so Axis Mutual Fund Trustee Limited. See, this is the another company. Are you guys getting me? Yes. So there is a Yes. trustee they have appointed. Now they want to appoint AMC, asset management company, wherein all portfolio managers or investment managers would be a part of that department. So asset management company. So Axis Mutual Fund AMC, that is the subsidiary that they have created. Now, who will be the custodian? In India, Deutsche Bank, HSBC, these are the custodians, right? Apart from that, there are several other custodians. Can you guys help me with the custodian's name internationally? Northern Trust, JP Morgan, Northern Trust, The BNY Mellon. BNY, JP Wells Morgan, Black Fargo, State Street, Wells hmm, Fargo, State Street. Wells Fargo, HSBC, Citi, yes, City, okay, GS, City. GS, City Bank. BNY. hmm, BNY, okay, yeah, Morgan Stanley, okay. yeah, BlackRock, That, BlackRock and Morgan Stanley. my friend, Morgan Morgan Stanley. BlackRock is Stanley. the no, BlackRock is the investment management company. Okay, but banks, Morgan Stanley. Morgan Stanley, yes. Okay, so these are all custodian. So these are the big institutions or a bank who has a license to safekeep the assets of their investors. Are you guys getting me? Yes. Yes. Okay. So once that so you will see the HDFC, sorry, here, Deutsche Bank is the custodian, and then have you guys heard about earlier there was a Camps and Carvey, now it is FinTech, right?
Carvi, Yes. Fintech. These are the transfer agent, and the Carvi, Fintech privately again register and transfer agent. See, both are taken care by the one institution, Carvi and the yeah, Fintech. Now auditors also required because there should be a third party audit should be conducted because somebody's money is handling by somebody. So who is are either that person or that entity is not misusing that funds or securities of clients. So they had to appoint the auditor to bring more transparency in the transaction, and that's where the auditor. So see, this is the actual back end process that happens in the mutual fund. So tomorrow, if you want to purchase any mutual fund, guys, just simply do one thing. I will just show you. These are the steps that you guys have to follow. First of all, understand the reason for your investment. Why are you investing? Then identify the ratings of that mutual fund. Okay, analyze that, deep dive that entire portfolio. Okay, and then exit load and expense ratio. What is that exit load, guys? Entry load, exit load. What is that? It's the charges that Yes, they have 1% charges. It depends, right? If Entry load, exit load. That is just to. Okay, so for Sir, example, these are the fees charged on that particular fund, right? Excess of fees that will be charged. Then sir, this, AMCs. Yeah, please go ahead. sir, this is depend upon the CAGR as per. Right. Okay. And then asset management company. Now you will have to make sure who is the fund manager, what was his how many funds he is managing, how many of those funds are performing very well. If that fund manager has recently joined another mutual fund, what was that what was his previous record? Okay, how much percentage of returns he was generating in the previous AMC? Now he has, since he has joined the another AMC, how much expected return he might generate? So based on the pace of that fund manager also, the you can decide or take the decision whether that fund will perform very well or not. Okay, then disciplined approach. You cannot expect returns in the short span of time. So you'll have to stay invested for a longer period of time. So you'll have to maintain that discipline. Okay, you can't just simply invest today and expect in a 1 year or 2 years down the line that I need to generate 10%, 15% return. No, it is not practically possible. Okay, but you'll have to stay invested for a more than 5-10 years. Then only you will see the compounding effect, right? And once your compounding effect starts generating the or multiplying that corpus, you will see the actual magic of that fund. Are you guys getting me? Yes, 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 Okay. All right. So tomorrow, if somebody asks you the question, what is the mutual fund? Would you be able to answer that question, guys? yes, sir. What? The one of the wise person also says that Warren Buffett don't Mhm. put the whole money in the one basket because the main reason is that Exactly. yes, Right. yes. Right. Mutual fund And is don't keep basically a all your basket eggs of in. investment. Don't keep all your eggs in one basket. yes, sir, yes, sir. I Yes, have read it is the it is just like just like investing in a multiple securities through Right. one. Right. sir, But why sir. do we why can't we take keep all your eggs in the one basket just like that? For example, if you're investing maximum Bro, of your. it will you will face the losses and pros, profit and you will have to bear the pros and cons of one basket. If you are Hmm. investing in one, then you have to bear the pros and cons. If you are investing in multiple securities, then you it will get managed. Your losses and profit will be managed. If Right. So basically, you are Right. when we are diversifying your portfolio. Diversifying means you are applying various different segments. So, for example, if you have diversified your portfolio in the bonds, some portion you have invested into equity, mutual fund, or some other instrument, golds, right, on or properties, or So it is, if you are diversifying your portfolio, that time if one particular segment goes down, right, the another segment will probably save your or safeguard you. So there will be a balanced approach, right?
So make sure that your portfolio should be always diversified. Guys, what I'm going to do is, for you guys, I'm going to keep one session probably in the next month or so. I will keep you posted on that. So there will be, I'm going to give you one session on the personal, financing, or how to create own portfolio, and what are the tips and tricks for the own personal finances, how to manage your personal finances. So we will have that session probably next month or so. I will keep you posted. So just attend that 2 to 3 hour session, but that is eye opening session for you guys. You will come to know exactly how you can manage your own portfolios. Okay. All right. Yeah. So you can Yes. see, you can take, yeah. So you can take example here, right? How much percentage, or these are all various mutual funds, and these are the NAVs, assets, and 3 months return, 6 months return, 1 year returns, 3 years return, 5 years returns. So based on these returns, you can decide in which portfolio you can invest into. You'll have to do some kind of research. Who is your, fund manager? How much returns they have generated in the past? What is that? In which segment that portfolio has invested into? Right? You will come to know exactly in the Sir, prospects if you read. Yeah. sir, sir, I have a question regarding how to calculate the NAV, sir. How to Calculate the NAV, sir. NAV? Okay, the Yes. net asset value. What is the formula basically? Assets minus liabilities minus expenses divided by number of outstanding units. Outstanding Abhi, how, shares. right? Outstanding Shares. share, outstanding units means what? For example, it is nothing, but for example, this is a cake, right? Now suppose this cake is for 10,000 rupees, let's say. So there are four pieces, 1, 2, 3, 4. How much would this one piece will cost you? If you divide this 2,500. cake, 2.5, 2,500 2.5. rupees is right. So that Yes. means if the value of this particular cake is today, 10,000 rupees, each investor or each unit holder will get 2,500 rupees, right? Right. So this portion is 2,000, you will cost you for 2,500. But tomorrow, suppose the price of this cake increases by 2,000 and increase to 12,000. What would be the cost of this cake? 3. Hmm? 3 rupees. 3,000? 3,000. Sorry, 3,000. 3,000. Right. So that Right, means this, someone please mute apart from the Raj, sir, because it's getting very yeah, yeah, that would be great, guys. Yeah. So see here, so you can see day before, yesterday, the price of that cake was 10,000 rupees. That time, the NAV was how much? 2,500. Okay. And today, net asset value, this is net asset value. We are calculating just this per unit cost. Okay. So how many units do you have? Let's say you have one unit into number of, what is the NAV? That will be your actual price, right? So here in this case, today the price of this cake has increased from 10 to 12,000. So one piece of cake will cost you 3,000. So this is your NAV. How many number of units are there? 1, 2, 3, 4. So total number of units are 4. So 12 divided by 4 is how much? 3. So this is your NAV. Are you guys getting me? Yes, yes. So these are the number of units, outstanding units. So for example, the number of unit increases, then accordingly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, the number of participants who are contributing, or the number of units that they are purchasing, that will be deciding your price of that or cost of that particular unit. Are you guys getting me? Yeah. Okay. All right. Now Yes, sir. let's move on. Yes. Yeah. So, The total yes. portfolio divided by number of unit, like. Yes. So for example, in particular portfolio, let's say, 10,000 people have contributed, let's say. Okay. So that 10,000 will be your number of outstanding units. Getting me? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes. Now let's understand some other concept. Okay. Because, sorry guys, I'll have to rush quickly, but there are a couple of things that you guys just take down this, take a note of this. These are the topics that you have to prepare before you go for an interview. Capital market,
equity, bonds, mortgage-backed security, asset-backed security, derivatives, Can you forex. forward that PDF that you are previously showing? Actually, I've just joined on the group. Yeah, if you could forward this PPT or Word document to the group so that we can have a take a look on that by downloading it. Uh, you can take down the screenshot of this, my friend. Yeah. Okay. Okay. So I would request you guys to just note down these topics. Okay. Forex, hedge fund, mutual fund, private equity, corporate actions, credit default swap, transaction services, KYC, trade life cycle. Sir, Hmm. sir, in the today scenario, like the most of the person also using the fund account. So what are the relevance of fund account? Because I'm a fresher, so I'm not much clear about that fund accounts. Fund account basically treated as a venture capital form. Like, Okay. See, guys, first of all, let me just hope you guys are able to see my screen. Huh? yes, sir, yes, sir, difficult, sir, right, sir. Yes. Okay. Just a second. Now I'll quickly run you through what exactly this market, how this fund houses work and how this exactly works. Just a second. Okay. So now, first of all, what you guys have to do is, first thing, you should know all the products. Could you please go on mute, Priya? Priya, could you please go on mute? Sir, I think some of the noise coming from your side, sir. Okay. सर जैसे कि मैंने मतलब कुछ कुछ की बुक्स में पढ़ा है कि मतलब जो प्राइवेट इक्विटी होते हैं Hmm. और जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं मतलब Hmm. स्टार्ट जो स्टार्टअप को बेसिकली फंड देते हैं क्योंकि जो स्टार्टअप कंपनी होती है जो स्टार्ट Hmm. मतलब कोई भी अपना उनको बैंक तो फंड करेगा नहीं क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह Okay. नहीं है Hmm. तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं जो प्राइवेट इक्विटी मतलब वो Hmm. क्या करते हैं मतलब जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो उनको मतलब ज्यादा मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मतलब वो अपना फंड को रेस करते हैं तो मतलब बेसिकली और वो इसी कारण से उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं तो प्राइवेट इक्विटी सर और वेंचर कैपिटलिस्ट दोनों एक ही है मतलब अलग अलग है सर दोनों प्राइवेट इक्विटी के अंदर ही आता है वेंचर कैपिटल वी विल सी दैट इन डिटेल गाइस देयर इट इज आई मीन उसके टाइप्स है वो ओके तो सबसे पहले आपको क्या समझना है वो पहले देखते हैं आपका जो भी स्टडी होना है ना फाइनेंशियल मार्केट इफ यू गाइस वांट टू वर्क इन द कस्टडी if you want to work in the investment banking hedge fund mutual fund private equity right so if you यस want to work in this segment first of all you should know all the products okay products when I say products means all your bonds Bonds, stocks, equity right then yes. you will have a derivatives instruments derivative instruments में क्या क्या आएगा Future फॉर option, future forward option, For forward swap, futures, swap, option, option swap, swap. swap CDS right उसके बाद Yes. repo repurchase reverse repo, agreement reverse है repo. ना what Commercial is paper, हाँ collaterals what is com- collateral commercial right paper. हाँ तो वो टाइप्स में आ जाएंगे ना बॉन्ड्स में दो टाइप्स है वी हैव ऑलरेडी सीन दैट राइट Yes. मनी Yes. मार्केट एंड Capital कैपिटल market. मार्केट इन द फर्स्ट सेक्शन राइट तो Yes. सीडी सीपी वगैरह सब आएगा उसमें Oh, सीडी सीपी उसके बाद प्रोमिसरी नोट उसके बाद कॉल मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स राइट सो ऑल yes. दीज थिंग्स यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल नो सो दैट मीन्स दिस आर योर बेसिक थिंग्स विल बी क्लियर once all these basic things are clear then the next step is you should know about the asset management companies asset management companies में क्या होगा asset management मतलब यहाँ पर you are going to I mean somebody is managing your assets whose asset Yes. institutional investors asset retailers assets बैंक आई मीन HNI's assets राइट तो उसके लिए क्या क्या होगा म्यूचुअल फंड उसके बाद पेंशन फंड ओके पेंशन फंड Hedge, hedge fund. हेज फंड उसके बाद प्राइवेट इक्विटी उसके अंदर ही वेंचर वगैरह सब आ जाएगा वेंचर कैपिटल वगैरह वेंचर कैपिटल मीन्स व्हाट सो स्टार्टअप्स के लिए अगर पैसों की जरूरत पड़ती है देर इज अ हाई रिस्क राइट
सो हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं लोग. तो वेंचर कैपिटल न्यू स्टार्टअप्स है, तो स्टार्टअप्स में कोई इन्वेस्ट करेगा तो वहां पे वेंचर कैपिटल. प्राइवेट इक्विटी वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, या दैट कंपनी नीड एडिशनल सपोर्ट, मैनेजमेंट और फाइनेंसिंग की जरूरत है. सो बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में क्या किया जाता है कि the pool of money, I mean the of course high net worth individuals and only institutional investors can part in this. We cannot invest into this hedge fund and private equity as a retailer. Okay, so these big institutional investors will create the limited partnership. Have you heard about LP, limited partnership? Yes, sir. Okay, so that limited partnership will be created, and based on that investment will be made into various other portfolio. That could be anything. Means there will be one general partner, and all other investors will be termed as a limited partners. Means their liability is limited to their capital invested. Are you guys getting me? Okay. Sir, yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसमें जनरल पार्टनर में जस्ट लाइक यू एंड मी, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टार्ट अप बिजनेस, राइट, तो इनिशियली स्टार्टअप में जो प्रोप्राइटर्स बोलते हैं ना हम लोग, जो इनिशियली जो आइडिया लेके आते हैं, सो दीज जनरल पार्टनर्स आर एक्चुअल डिसीजन मेकर इन इन्वेस्टमेंट्स. ओके, सो दे आर टेकिंग द डिसीजंस इन इन्वेस्टिंग इनटू दैट portfolio, but the limited partners are just the investors. They have a limited liability, but they are just investing in the general partner, I mean making investment to earn the high rate of returns. Okay, and that's the reason high risk bhi zyada hai or returns bhi zyada hai. So basically general partner will charge 2% of management fees and 20% of performance fees. Okay, so you should know that in the limited partnership, if somebody asks you in the hedge fund or private equity how much the general partner charge, so you can say 2/20. So 2/20 means 2% is a management fees and 20% is a performance fees. मतलब अगर सब partners, समझो there are 10 partners and 10 partners are investing 100 CR. Okay, so 100 CR means how much would be the total outcome, guys? Total fund by contributed by 10 limited partners. 10 पार्टनर्स ने 100 2000 करोड़, 1000 कितना crore. होगा? 1000 crore. 1000 करोड़. Yes, sir. Okay, अभी this 10,000 sorry sir, this 10,000 crores, they will not invest. The general partner will now start finding the opportunities in the market, which market they want to invest into, right? They will look, is there any real estate, they will see the opportunity. They might see some investment into particular what we can say, buying one particular company or company's maximum shares, right? They will find some opportunities in financing one startups, right? They will find some opportunity investing into some let's say fund बेस्ट फंड जो है उसमें उन लोग को अच्छा रिटर्न्स दिख रहा है तो दे कैन इन्वेस्ट. बट दैट 10,000 that capital will not be invested at one go. General partner will first do the analysis in the market. He will find out the opportunities, and based on that he will make the decision. So this limited partner will get notices every time. तो पहले समझो उन्होंने डिसाइड किया कि 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है. सो इफ द 300 स्ट्रेट अवे अपन चलो 500 करोड़ का लेते हैं, तो ईच पार्टनर को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा गाइस? 50 CR. 10 पार्टनर है, 100 का कमिटमेंट है. दिस 1000 इज द कमिटमेंट कैपिटल. मतलब हर एक 10 मेंबर्स को 100 करोड़ के हिसाब से 1000 करोड़ इकट्ठा करना है. दैट इज कमिटमेंट कैपिटल, कमिटेड कैपिटल है. बट एक्चुअल उसकी जो सब्सक्रिप्शन कितना कर रहा है, कॉल कितने का आया? 50 करोड़ का. सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल कॉल बोलते हैं इसको. कैपिटल कॉल मतलब बोला जाता है जनरल पार्टनर विल आस्क limited partners to contribute 50% of their contribution so that they will invest into that particular opportunity. Are you guys getting me? Yes, sir.
Okay, so then if general partner is making this investment or taking the decision, they are doing research and everything, then this general partner will have to maintain the company's record, company के assets maintain करने हैं, employees को salary देनी है, so काफी सारी चीजें, right? So they will charge 2% as a administrative charges. This is इसको बोलते हैं हम लोग management fees बोलेंगे इसको, management fees. और 20% अभी इतनी रिस्क ले रहा है, ही इज डूइंग हिज बेस्ट एज पर हिज बेस्ट कैपेसिटी, ही इज जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स. सो अगर 1000 का 20% कितना हुआ गाइस? 200. 200. So 200 would be the performance fees. ये GP charge करेगा. Of course, in detail if we go, there is a hard hurdle, soft hurdle, high water mark. These are the terminologies used in this thing. But What is high water mark? And that term you are using. What is the Right. meaning of? I think right, it's a see for benchmark. example, you guys, let's say एक पानी का टंकी है, हाई वाटर मार्क मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल आपने इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो मैनेजर ने ईयर 1 2 3 4 ये 4 साल है पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके रखा है आपने. दैट पोर्टफोलियो, दैट जनरल पार्टनर और दैट फंड मैनेजर हैज मैक्सिमम जनरेटेड रिटर्न्स. यहाँ पर उसने 120% उसने जनरेट किया है. दैट इज द हाई वाटर मार्क. मतलब पानी का टंकी है ना, टॉप पे कितना लेवल पे गया है? 120. बाकी सब साल में 70%, 50, 100, 90. बट एक हाईएस्ट मार्क कितना किया है उसने? 120 का टॉप किया है. आर यू गाइस गेटिंग मी? सर ये हर साल काउंट होता है हाई वाटर मार्क या मतलब as नहीं, per हाई वाटर मार्क मीन्स व्हाट? हर साल इन द सेंस अगर उसने इन्वेस्टमेंट अगले 5 6 10 साल के लिए रखा है तो उस ईयर में मैक्सिमम उसने जनरेट कौन से ईयर में किया है? हाईएस्ट टॉप किधर किया है? तो 120. पिछले 4 साल में उसने, समझो थर्ड ईयर ही हैज अचीव्ड दिस टारगेट ऑफ 120. अगेन ही डिड नॉट बेच. सो दिस इज द हाई वाटर मार्क. ओके, जो टॉप में अगर आफ्टर 5 years अगर उसने 130 किया तो ये हाई वाटर मार्क अब 130. Right. Yes. Then that will be crossed. Right. Okay. That will be crossed. Right. And Yes. then the soft hurdle, hard hurdle. So see, the moment fund manager achieves the high target, right, expectations from the limited partners will automatically increase. वो बोलेंगे यार तूने last year तो मेरे को 120 दिया था, अभी तूने 70 ही किया, 50 ही किया. That means you are not performing. But that is not the case. It is completely depend upon the market conditions. Are you guys getting me? सर हर्डल रेट और हाई वाटर मार्क Yes, मतलब hurdle rate मतलब क्या है कि for example if that limited partner is investing into that portfolio, so they have to have maintain some decency ना. भाई मेरे को इतना परसेंट तो मेरे को चाहिए ही चाहिए. So for example let's say आपने इतना इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट में आप सबसे पहले क्या करोगे? आप 2% का आपको मैनेजमेंट फीस देना है, बराबर है? मैनेजमेंट फीस के बाद आपको, मतलब आपका ये समझो 100% कैपिटल है और सर, उसके यहाँ पे ऊपर सर यहाँ पे हम लोग केओ को सब देख लेंगे, केओ रिकवर हो रहा है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपना, तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन ले लेंगे. राइट. बट अभी कैसा है ना कि डिपेंडिंग अपॉन आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है. अभी जैसे मैंने बताया कि हार्ड हर्डल, सॉफ्ट हर्डल, या आप कभी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइम पे, अग्रीमेंट्स के टाइम पे आप डिसाइड करोगे कि भाई मेरे को इतना मिनिमम जनरेट होना चाहिए मेरा रिटर्न, तो ये मेरा आपका बेंचमार्क हो गया, राइट? उस बेंचमार्क को आप डिसाइड करोगे कि भाई अब मेरा हाई वाटर मार्क क्या रहेगा. तो हाई वाटर मार्क मेरा सबसे ज्यादा टॉप कितना रिटर्न दिया है उसने, इतना दिया है, तो दिस इज माय हाई वाटर मार्क. So will some other day, actually it is not practically possible for us to discuss, in a short span of time. But there is a complete 1.5 hour session जो लगता है जिसमें हम लोग ये सब डिस्कस करते कि सॉफ्ट हर्डल, हार्ड हर्डल, हाई वाटर मार्क, उसमें कैसे वो कैलकुलेट होता है, एंड इवन कैरीड इंटरेस्ट क्या है. ये सब चीजें हम लोग को समझने के लिए कम से कम 1.5 घंटा जाएगा मिनिमम. गेटिंग मी गाइस? Yeah, we request you to take one session on that day. Yeah, okay, right. We will try to do that, but guys, मेरे other batches भी होते हैं, right? So this is just I'm giving you an understanding because see, ये सेशन मैंने लोगों ने फ्री में क्यों रखा है ताकि एटलीस्ट यू गाइस विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेड है, राइट? फ्रॉम द जॉब पर्सपेक्टिव एंड व्हाट यू शुड नो.
So clear about asset management, and then you will move on to the investment banking. अभी investment banking में क्या होगा? सर एक एक बात मिनट, हाँ बोलो। सर इसमें जैसे आपने बताया कि प्राइवेट इक्विटी में जो हम लोग के एचएनआई होते हैं और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं वो जो पैसा हम्म, इन्वेस्ट करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में, तो ओनरशिप वो उनका जो ओनरशिप के साथ ट्रांसफर हो जाती है ना, मतलब जो ओनरशिप मेजोरिटी होती है 51% से ज़्यादा, तो वो लोग स्टे कर लेते हैं ना सर। आपका आवाज बहुत ब्लर आ रहा है, मतलब बीच बीच में योर वॉइस इज क्रैकिंग। सर अब आ रही है? हेलो? हाँ बोलो। हेलो? सर हाँ हाँ बोल रहा बोलो था कि बोलो। सर जो प्राइवेट इक्विटी में जैसे हम लोग का इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं और जो एचएनआई होते हम्म हैं जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं प्राइवेट हम्म कंपनी में, तो सर हम्म। जिसको इन्वेस्ट करने का होता है जो उनका जो कंपनी का ओनरशिप होता है, जो प्राइवेट कंपनी का जो मतलब ओनरशिप होता है वो लोग मतलब होल्ड कर लेते हैं, मतलब मेजोरिटी ओनरशिप। तो उनका जो लाइबिलिटी क्या होता है, तो वही मैं जानना चाह रहा था कि मतलब पूरा मतलब मेजोरिटी जो होल्डिंग है वो प्राइवेट जो एचएनआई होते हैं उनके पास होती है कि जो अदर प्राइवेट इक्विटी के ओनर होते हैं उनके पास होती है? सी एलपी मतलब क्या है? लिमिटेड पार्टनर्स मीन्स द इन्वेस्टर्स, राइट? इन्वेस्टर कौन होंगे? द इन्वेस्टर वुड बी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये एलपी मतलब कौन है? एलपी मतलब नथिंग बट द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, एचएनआईज या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यस। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, राइट? ये इसमें से कोई भी हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बैंक्स भी हो सकती है, राइट? या कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है। अभी एचएनआई का कंसेप्ट क्या है कि एचएनआई में भी जिनके पास हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का एक सर्टेन क्राइटेरिया दिया है, वो क्राइटेरिया पास करेगा, दिस शुड बी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट, ये हो रहेंगे क्या बोलते हैं ना, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स होने चाहिए। ओके, उनका नेटवर्थ एक सर्टेन अमाउंट तक होना चाहिए। वो दोज ओनली पार्टिसिपेट इन द दिस प्राइवेट इक्विटी एंड हेज फंड्स। अभी इसका जो फंडिंग है वो फंडिंग एक साथ में क्रिएट किया जाता है, ये पूलिंग। ओके, और ये पूलिंग इन्वेस्ट कौन करेगा? जनरल पार्टनर। बट दे आर जस्ट, तो कल उठ के अगर ये कंपनी डूब जाती है या इसमें नुकसान हो जाता है, तो ये लिमिटेड पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितनी होगी? ये 1000 करोड़ नहीं होगी। देयर लाइबिलिटी वुड बी लिमिटेड टू देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड, मतलब 100 CR तक। ज्यादा से ज्यादा उस पार्टनर का नुकसान कितना होगा? उसका जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उतना ही, 1000 करोड़ का नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ये समझ लो, you should know the products, you should know how the asset management companies work, their structure, mutual fund, pension fund, hedge fund, private equity, venture capital and all so and so forth. Okay, उसके बाद आपको जाना है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपको बहुत सारे टर्म्स है जो याद रखनी है। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपको सबसे पहले यहाँ पर, अभी इन्वेस्टमेंट बैंक का मेन काम क्या है गाइस? सॉरी सर। इन्वेस्टमेंट बैंक का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक? सर सिंबलाइज द सेविंग एंड Like सर ये इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स एज वेल एज द हाई नेटवर्थ एचएनआई इन्वेस्टर्स। वो तो Creation काम of उन्होंने किया capital. ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने किया वो काम। अभी वी Creation सॉ, of राइट? capital. is a दैट part इज of टेकन, दिस इज टेकन केयर बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज माय फ्रेंड। अभी अभी इसमें देखो, इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम मेजर क्या है? दो चीज है। Creation of capital. रेज कैपिटल, किसी कंपनी को आईपीओ मदद करने के लिए, मतलब आईपीओ रेज करने में मदद करनी है तो रेज कैपिटल करना है। और दूसरा है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ओके, इसमें बड़े बड़े कंपनीज को सलाह देके उनको समझो एक्वायर करना है, किसी छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी को किसी छोटी कंपनी को एक्वायर करना है, किसी मार्केट में उसको बिजनेस एक्सपांड करना है। सो इन दैट केस दिस इन्वेस्टमेंट बैंक्स यू नो help them to expand their business, to raise their capital, to merge and merger acquisition करना है, तो उसके लिए ये काम करती है। अभी हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए, हैव यू गाइस हर्ड अबाउट कस्टोडियन बिजनेस? they safeguard the asset. बराबर, सेफगार्डिंग एसेट्स। So they keep the records of the securities and the bonds of the bank.
Then guys, हाँ, what is the difference between custodian? तुम लोग लिख लो, just important question मैं बता रहा हूँ. What is the difference between custodian and depository? क्या है difference? What is the difference between custodian and depositories, guys? Custodian is just like that to safeguard your assets, stocks. Who? So the, Which? the, Who? uh, your- Avan, your कस्टोडियन voice is ट्रेडिंग भी cracking ना. हाँ बोलो. सर कस्टोडियन ट्रेडिंग भी अलाउड मतलब आप कर सकते हैं कस्टडी में है तो मतलब बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग भी हम मतलब वो अलाउ करते हैं. के लिए रखा वो So land के in custodian basically we hold the securities. In depository it is a demat form, like we transact on the computerized basis. That is called. Thank you guys. तुम लोग क्या बता रहे हो ये सब चीजें? You are giving me weird answer. Any which ways, major difference क्या है ना? आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ. ये सबसे पहले आता है डिपॉजिटरीज. इंडिया में डिपॉजिटरीज कौन सी है? NSDL, CDSL. NSDL, CDSL. What do they Yes. do? What do they do? They save the securities, right? They safeguard the assets of the Ah, whom? funds, like any mutual funds like that. See, custodian, depositories. सबसे पहले ध्यान में रखना, custodian safeguard the assets of their investor and depositories, ये डिपॉजिटरीज क्या करेंगे? सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द कस्टोडियन. अभी आप बोलोगे ये क्या है, तो फॉर एग्जांपल ये जब फॉर एग्जांपल आप मैनेजर हो और यहाँ पे अंडर आपके 50 लोग हैं, तो आप डायरेक्टली मैनेजर को रिपोर्ट ये करता है क्या? इसके बीच में टीम लीडर भी होता है ना, Yes. तो ये टीएल इसको रिपोर्ट करता है और उसके बाद ये इसके अंदर 2-3 टीम लीडर्स रहेंगे, वो टीम लीडर्स ये फाइनली इसको रिपोर्ट करते हैं. तो सिमिलरली ये डिपॉजिटरी है टॉप पे, ये कस्टोडियन को इंटरनेशनल मार्केट में मेजॉरिटी यूज होता है टर्मिनोलॉजी, इंडिया में हम उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपीस. ओके, तो बेसिकली क्या है, डीपीस के पास आपका इन्वेस्टर्स के एसेट्स रहेंगे. So why do custodian safeguard the asset? They safeguard the assets of their investors and they are protecting from the loss or theft. Okay, but actual record जो होता है ना, depositories are the registered or legal owner of the assets or that bond or security. Write it down. This is important. Depositories are registered or legal owner of the security. However, बेनिफिशियरी ओनर कौन रहता है? इन्वेस्टर इज बेनिफिशियल ओनर. मतलब आपके पास अगर टाटा के सिक्योरिटीज है, टाटा मोटर्स के, तो टाटा मोटर्स की सिक्योरिटी समझो किन के पास है? इधर कौन दिख रहा है? सुगन के पास समझो 100 टाटा मोटर्स के सिक्योरिटीज है. सो सुगन इज अ beneficiary owner of that security. Means tomorrow if there is any corporate action happens, मतलब उसके ऊपर कुछ डिविडेंड मिलता है या उसके ऊपर बोनस, राइट इश्यू, whatever that happens, then he is entitled to receive that that corporate action. He is a beneficiary owner, but actual registered owner or legal owner is who? NSDL or CDSL, or wherever that security is registered with. Are you guys getting me? Yes, yes. Everyone? नहीं समझ में आ रहा है? Okay, so depositories are the registered or legal owner of that security and the investors are the beneficiary of that security. Custodian is the custodian safekeep the assets of investors and depository is safekeeping the assets of the custodian. Custodian. ठीक है, तो ये बड़ी टर्म है. ये डिपॉजिटरी इज ये एवरीथिंग इज सेफगार्डेड और सेफकीप्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ETD, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. गेटिंग मी? Yes. Sir, ओके, got it. अच्छा, तो ये हो गया. आपको ये सब बात पता होना चाहिए. फिर उसके बाद आपको
who is broker, who is dealer, who is a custodian, who is a sub-custodian. Who is a sub-custodian, guys? Who is a sub-custodian? Nahi? AMC, AMC. No. No, 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 no. For example, JP Morgan is a custodian bank in US, but in India they don't have a presence. Okay, so in India they will seek assistance from HSBC or Deutsche Bank. So Deutsche Bank and HSBC have a presence in Indian market. So for any customer who is belong to US and has account with a JP Morgan, and if they want to purchase the security in Indian market, in that case, since JP Morgan does not have presence in Indian market, they will seek assistance from HSBC or Deutsche Bank. So Deutsche Bank or HSBC will be sub custodian. मतलब जिस भी मार्केट में कस्टोडियन का ओन प्रेजेंस नहीं रहेगा, and if he is seeking assistance from another bank, that bank or local bank or that that bank will be called as sub custodian. Are you guys getting me? Yes, sir. Yeah, Yes, sir. it is the same applicable to across the all formats. Like when I say All over the world, all over the world. In India, HSBC and Deutsche Bank are the sub custodian for for State Street, for JP Morgan, or for any other banks, because it is completely depend upon if that particular bank has a present into that local market or not. Clear? Yes, Yeah, sir. I just Okay. wanted to say one thing that you are saying about the sub custodian, right? So yeah, okay. Now I'm being an Indian investor. If I'm buying US securities, so you are saying that okay. I don't know who is the custodian. Okay, if JP Morgan is a custodian over there, so um since the JP Morgan is not in US, so they'll take their local banks as a custodian. Just no. Let me explain you one thing. For example, this is an investment manager. That investment manager makes the decision to purchase, sale, and buy or sell the securities in the Indian market. Let's say they want to purchase the Tata Motors ka security. Okay. Now this investment manager is a BlackRock. Let's say BlackRock based out in US. Okay. Now this BlackRock fund house wants to purchase security in Indian market. Where will they reach out to first? ब्रोकर के पास जाएंगे ना परचेस करने के लिए सिक्योरिटी. Yeah. Yes, sir. Okay, so once they reach out to broker, then that broker will reach out to the local exchange NSE BSE. Correct. क्योंकि वो यूएस से खरीद रहा है, लेकिन मार्केट कौन सा यूज कर रहा है? इंडियन मार्केट में खरीद रहा है ना, तो ये ब्रोकर जो है वो इंडियन का होना चाहिए, क्लियरिंग एजेंट. आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ओके, तो वो एनएससी बीएससी पे गया, एनएससी बीएससी पे आइडेंटिफाई किया, एंड ही कंफर्म्स बैक टू द इन्वेस्टमेंट मैनेजर स्टेटिंग दैट एज पर योर रिक्वायरमेंट द सिक्योरिटीज अवेलेबल इन द मार्केट, डू यू वांट टू कंटिन्यू? दिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर सेज यस. नाउ ये सिक्योरिटी तो खरीद लिया, लेकिन अभी रखेंगे कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट मैनेजर कैनॉट कीप हिज क्लाइंट्स एसेट्स एंड कैश इन हिज ओन अकाउंट, सो दे हैव टू अपॉइंट अ कस्टोडियन. सो लेट्स से custodian. So let's say they appointed State Street, SSC, State Street Corporation, okay, in US. तो ये BlackRock का अकाउंट है State Street बैंक के पास US में as a custodian. Now State Street does not have a presence in Indian market. तो इंडिया में प्रेजेंस किसका है? तो ये कस्टोडियन के साथ इसको प्रेजेंस ये लेना पड़ेगा Deutsche Bank या HSBC. These are the called as a sub custodian for this custody. Are you getting me? Yes. Yes, sir. क्योंकि ये ट्रेड जब भी कस्टोडियन से बुक होगा और यहाँ से ब्रोकर से इंस्ट्रक्शन आएगा, तो जाके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी कि सॉरी डीपी यानी कि आपका जो सेटलमेंट लोकेशन है वहां पे ट्रेड सेटल होगा. मतलब अपने यहाँ पे कहाँ पे होगा? अपना NSDL CDSL या अपने डिपॉजिटरीज है, बराबर ना? Yes, sir. तो यहां पर एक क्लीनिंग कॉर्पोरेशन आएगा NSCCL, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. ये क्या करेगा? ये यहाँ के मतलब ये एक कस्टोडियन, मतलब ये एक लेग हो गया, मतलब समझो ही इज अ बायर,
तो एक सेलर रहेगा, दूसरा एक जो रहेगा वो सेलर रहेगा। तो सेलर का कस्टोडियन से एक इंस्ट्रक्शन आएगा और ये बायर के इंस्ट्रक्शन कस्टोडियन से एक इंस्ट्रक्शन आएगा। दैट बोथ विल बी मैच्ड एट द क्लियरिंग हाउसेस लेवल। आर यू गाइस गेटिंग मी? Yes, sir. यहाँ पर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट हो जाएगा। और NSDL CDSL पे both cash and securities will change the hands and that will be called as a settlement, clearing and settlement. Clear? यस सर, यस सर, गॉट Okay. इट। हाँ, तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, who is IM, who is PM, portfolio manager, who is investment manager, who is a broker. Broker may be clearing broker and executing broker. Okay, you should know who are the exchanges. NCDC. Okay, sorry. So are you guys getting me? Are you guys able to understand what is the requirement of industry? So you should know complete flow of यस सर, यस सर। ट्रेड लाइफ साइकिल। आपको ट्रेड लाइफ साइकिल आना जरूरी है। ट्रेड लाइफ साइकिल में कैसे काम करते हैं? Guys tell me quickly. Other days Front about office, middle office, back office. हाँ, बैक ऑफिस में कैसे काम करता है ट्रेड लाइफ साइकिल? हाउ डज दैट वर्क? सर, सर बूम रिकवरी। क्या बोल रहे हो? आपको ट्रेड लाइफ साइकिल के बारे में अगर किसी ने पूछा इन द इंटरव्यू, हाउ आर यू गोइंग टू टेल देम, हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन देम व्हाट आर द स्टेजेस इन ट्रेड लाइफ साइकिल? ये इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आएगा? इफ यू गाइस आर वर्किंग फॉर एनी कस्टोडियन बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट? तो आपको ये पूछा जाएगा व्हाट इज अ ट्रेड लाइफ साइकिल। ट्रेड कैसे काम करता है, एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द ट्रेड। कैन Yही एनीबॉडी हेल्प front मी? office, middle office and back office. फ्रंट ऑफिस में ट्रेड कैप्चर होता है, मिडिल ऑफिस में ट्रेड बुकिंग होती है, ट्रेड बुकिंग एंड वैलिडेशन, एंड बैक ऑफिस में एग्जीक्यूशन होता है ट्रेड का, ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन। Okay, but there are certain stages, guys, you should know. सबसे पहले आएगा ट्रेड इनिशिएशन। Okay, write it down ना everyone. This is very very important. Trade initiation stage, उसको हम बोलेंगे प्री ट्रेड। अभी क्या होता है प्री ट्रेड? ये होगा T+, ये होगा फ्रंट ऑफिस। हाँ, फ्रंट ऑफिस है ये T+0, मतलब जिस दिन ट्रेड होगा उस दिन होगा। मतलब क्या होगा? ट्रेड इनिशिएशन मींस व्हाट? दैट द इन्वेस्टर विल रीच आउट टू हिज रिसर्च टीम एंड टेक अ डिसीजन कि रिसर्च टीम बताएगी कि कौन से मार्केट में कौन सी सिक्योरिटी खरीदनी है या बेचनी है। दैट डिसीजन विल बी मेड, दैट इज कॉल्ड, हम बोलेंगे, so then it will be decided कि मुझे बायर बनना है कि सेलर बनना है। so that initial stage is called a trade initiation stage. Getting me? Yes. so this is called a pre-trade. उसके बाद दूसरा होता है once that decision is made, who will be, what would be your position? Are you buyer? Then if you are a buyer, then you have made a decision that you are a buyer, then you will place the order now. Okay, so let's say there will be order placement stage. Okay, this is again front office T+0. Okay, तो ऑर्डर प्लेसमेंट में क्या होगा? यू विल प्लेस ऑर्डर विद द ब्रोकर, राइट? ब्रोकर को ऑर्डर प्लेस करोगे एंड ब्रोकर विल पंच दैट ऑर्डर इन हिज सिस्टम, राइट? अगर ब्रोकर ने पंच किया ऑर्डर तो किधर जाएगा? वेयर विल दैट गो?
once the order is placed by the broker in his system, the details will go where? मिडल ऑफिस. middle office, and even to अरे back बाबू, office. मिडल ऑफिस आने के लिए तो पहली बात तो पहले स्टॉक एक्सचेंज के पास तो जाना चाहिए ना ऑर्डर. Exchanges, yeah. पहले तो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा. स्टॉक एक्सचेंज पे जाने के बाद देयर विल बी ऑर्डर मैचिंग होगी. आपने जो क्वांटिटी सिक्योरिटी जो पूछा है उसका सामने वाला काउंटर पार्टी भी मिलना चाहिए ना आपको. once you get that, then the order will be placed, right? broker order place करेगा, और order place होने के बाद once order matches, मतलब वो order match हो गई, आपने quantity वगैरह जो डाला था उसके हिसाब से, then trade will be executed. So trade will go to trade execution stage. Okay, trade execution में भी वही होगा, front office T+0. Okay, once the trade gets executed, broker will pass these details to custodian. Okay, ये trade execute हो गया, बराबर ना. अभी क्या होगा, ये details जाएंगे custodian के पास. वहां पर आता है रोल trade capture. अभी custodian क्या करेगा, trade capture करेगा. Trade capture means what? This is middle office. अभी ये middle office में आ गया, T+0. Are you guys getting me? Yes. Okay, so trade capture team will capture all the details, सिस्टम पे डालेंगे, बाय सेल क्वांटिटी अमाउंट वगैरह सब डिटेल डालने के बाद देन क्लाइंट फेसिंग इज ओवर नाउ. अभी यहाँ पर इसके पहले यहाँ तक ये फ्रंट ऑफिस है, क्लाइंट फेसिंग हो गया. अभी ट्रेड कैप्चर कस्टोडियन के पास इंस्ट्रक्शन आ गए. द नेक्स्ट लेवल इज ट्रेड एनरिचमेंट. ट्रेड जो है, हैव यू गाइस एवर ट्रेड इन द मार्केट और प्लेस्ड एनी ऑर्डर? आपने कभी जीरोदा, ग्रो ऐप या कोई भी अपस्टॉक पे अपने सिस्टम पे कभी ट्रेड पंच किया है? हैव यू गाइस डन इट? यस सर. ओके, सो व्हाट डिटेल्स डू यू इनपुट गाइस? सर स्टॉक्स के कितना अमाउंट होना चाहिए, स्टॉक्स का कितना अकाउंट और किस रेट पे हम ले रहे हैं वो हमें ऑर्डर पंच करना होता है. बराबर, राइट. So you will have a limited details that you are punching in the system. Now this trade is now with the custodian. अभी enrichment में क्या होगा, there are two types of databases. One is trade data and one is static data. Static data. अभी ट्रेड डेटा मतलब क्या है? ट्रेड डेटा ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग. मतलब आप एक ट्रेड किया, उसमें क्वांटिटी 100 लिया, दूसरा ट्रेड करोगे 200 क्वांटिटी हो सकती है. अमाउंट इस ट्रेड में 100 रुपया होगा, उसके इसमें 150 हो सकता है. उसके बाद आपका सिक्योरिटी कभी टाटा मोटर्स कर सकते हो तो दूसरे ट्रेड में आप रिलायंस खरीद सकते हो. सो जो डिटेल्स विच ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग एज पर ट्रेड, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रेड डिटेल्स. ओके, एंड स्टैटिक डिटेल्स मीन्स some details are permanent that you cannot change. Client name, client's address, client's contact details, client's bank details, those are all static details. Are you guys getting me? Yes, sir. यस Okay. सर. उसको हम बोलेंगे SSIs भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड सेटलमेंट इंस्ट्रक्शन. ओके, बैंक नेम, बैंक अकाउंट, स्विफ्ट कोड, आईबैन नंबर, कंट्री, करेंसी, सेटलमेंट, ये सब चीजें आपके स्टैटिक डेटा में आएंगे. वंस दैट स्टैटिक डेटा इज अपडेट करने के बाद देन एक्चुअली दैट ट्रेड विल बी एनरिच्ड, मतलब पूरा ट्रेड सज जाएगा. ओके, एंड वंस दैट डिटेल्स आर अपडेटेड देन द नेक्स्ट लेवल इज ट्रेड वैलिडेशन. क्या होगा? ट्रेड वैलिडेशन. और उसको हम बोलेंगे वेरीफाई. बोलो स्विफ्ट कोड क्या हुआ? क्या होता है? जरा फिर से, आवाज आपका थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, बोलिए. स्विफ्ट कोड. स्विफ्ट कोड का मतलब होता है, स्विफ्ट इज अ मेथड ऑफ सेंडिंग इंस्ट्रक्शंस, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. ओके, तो स्विफ्ट मतलब इट इज द मैसेजिंग टाइप. ये ऑथेंटिकेटेड मोड है. जो भी स्विफ्ट का मेंबर बनेगा दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद दैट लैंग्वेज, और वो प्लेटफॉर्म से इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से. इट इज अ स्विफ्ट मतलब वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप ट्रांजैक्शन करते हो एक दूसरे
bank के साथ, one financial institution communicates with another financial institution with swift messages. ठीक है? Okay. Thank you. Then trade validation, trade verification होने के बाद means all the details will be matched कि भाई ये trade सही है, मतलब इसमें जो details डाले data will be cross checked and to avoid any kind of mistake. और वो होने के बाद ये सब हो गया मिडल ऑफिस में, मिडल ऑफिस T+0. उसके बाद आता है ट्रेड कंफर्मेशन. क्या आएगा? ट्रेड इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन. ट्रेड कंफर्मेशन स्टेज में क्या होगा? आपको कस्टोडियन विल कंफर्म द डिटेल्स टू द इन्वेस्टर. उसको हम लोग इंडियन मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट नोट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट, है ना? तो ये ट्रेड कंफर्मेशन में क्या होगा कि भाई ट्रेड कंफर्म हो चुका है T+0 मिडल ऑफिस. उसके बाद आएगा ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग स्टेज. Transaction reporting stage means what? Transaction reporting stage. Transaction reporting stage में क्या होगा? Basically जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, स्टॉक एक्सचेंज विल पुल आउट द डेटा वो पर्टिकुलर डे को, और एंड ऑफ द डे दैट डेटा विल बी पास डाउन टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग हाउस को भेजा जाएगा डेटा. ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग स्टेज में क्या होगा? कस्टोडियन will send that data, the stock exchange, they are not custodian, stock exchange will send this data to whom? Clearing house. ये क्लियरिंग हाउस को डेटा भेजा जाएगा ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग स्टेज में. फिर आता है ट्रेड कंफर्मेशन के बाद आएगा ट्रेड अफर्मेशन. अफर्मेशन मतलब क्या है? अफर्मेशन स्टेज. अभी ये आ गया T+1 मिडल ऑफिस. अफर्मेशन में क्या होगा कि बायर हु गॉट द कंफर्मेशन, ये बायर को जो कंफर्मेशन मिला है कि गॉट अ कंफर्मेशन दैट चेक वेदर ही इज ओके विद दैट. तो जो बायर है वो इन्वेस्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई वो जो ट्रेड डिटेल्स है वो सही है क्या, एंड ही अग्रीज एंड ही कंफर्म बैक्स टू द कस्टोडियन. तो ये इन्फॉर्म करेगा कस्टोडियन को. इट इज कॉल्ड अफर्मेशन कि मेरे जो डिटेल्स है ट्रेड के वो सही है. दैट इज कॉल्ड द. यहाँ पे कंफर्मेशन में क्या होगा? कस्टोडियन ने इन्वेस्टर्स को बोला कि ये डिटेल्स है, ये आप ये कर दो, चेक करो. तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट नोट. अभी अफर्मेशन स्टेज में क्या होगा? इन्वेस्टर इज कंफर्मिंग बैक टू कस्टोडियन दैट डिटेल्स आर एक्यूरेट. सो दिस इज कॉल्ड, एंड ये दोनों कंफर्मेशन एंड अफर्मेशन दोनों एक साथ में मिलके बनता है कॉन्ट्रैक्ट, ये अपना ट्रेड अग्रीमेंट. क्या बोलेंगे उसको? ट्रेड अग्रीमेंट. क्लियर? सर. ओके. अफर्मेशन स्टेज हो गया. फिर बाद में जाएगा, इसके बाद के स्टेजेस है जो है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट. उसके बाद आएगा पोस्ट सेटलमेंट. पोस्ट सेटलमेंट में क्या होगा? अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर फेल हो रहा है तो फेल ट्रांजैक्शन को रिपेयर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाके दे विल इन्वेस्टिगेट सामने वाले ने पैसा दिया है या सामने वाले ने सिक्योरिटी डिलीवर किया है कि नहीं, या किसके पास पोजीशन कम है ज्यादा है, हु इज सपोज्ड टू पे हाउ मच, राइट? सो ऑल दीज डिटेल्स विल बी चेक पोस्ट द ट्रांजैक्शन साइकिल. सो ये समझ में आया गाइस? दीज आर द ये स्टेजेस फ्रंट दैट ऑफिस लास्ट वाली स्टेज फ्रंट ऑफिस में आती है ना, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट. सॉरी कम अगेन. लास्ट वाली स्टेज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फ्रंट ऑफिस Clearing. में आती है, सॉरी बैक ऑफिस में आती है ना. बैक ऑफिस यस, बैक ओके. ठीक है. Sir, can you give me providing the PPT as well as previous class? अच्छा, ये डिटेल्स सब मैं शिवराज सर को दे दूंगा, एंड शिवराज सर विल अपलोड दोस थिंग्स ऑन द ऑन द पोर्टल. ओके, यू गाइस कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर. ओके, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि ये सब चीजें निकाल के भेजने. एंड द डेट्स आर देयर आर सर्टेन थिंग्स. देख अभी मैंने आपको ना एक 0.55% आपको मैंने बताया. अभी एक्चुअल में आपको कुछ चीजें बताता हूँ जाते जाते कि आपको क्या पता होना चाहिए. जस्ट सेकंड. Sir, your good name, sir?
My name is Viraj. It's okay. Viraj sir. Yes. Okay sir. So there are a couple of things that I want you guys to understand deeply. Okay, ट्रेड लाइफ साइकिल अभी हम लोग ने ये मैंने आपको बताया. उसमें भी काफी सारी चीजें इंडिया में कैसे काम करता है, फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ट्रेड फ्लो कैसे होता है, काउंटर पार्टीज कौन है, ट्रेडिंग क्लियरिंग सेटलमेंट कैसे होता है ना. उसके बाद रोलिंग सेटलमेंट साइकिल क्या है, वे कैसे एक्चुअल ट्रेड इंडियन मार्केट में सेटल होता है. देयर आर सेवरल थिंग्स दैट वी डिस्कस इन आवर क्लासेस, बट मैं आपको इतना टाइम अभी पॉसिबल नहीं है गाइस टू बी ऑनेस्ट. बट जितना हो सके मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव्स के इंस्ट्रूमेंट्स. ओके. उसके सर बाद एक बार कैपिटल मार्केट. हाँ बोलो. सर एक मेरा कल एक मतलब वो है मतलब फंड अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर. फंड अकाउंटिंग. अच्छा. ओके. फंड अकाउंटिंग के लिए ना माय फ्रेंड शिवराज सर हैज अ डिटेल्ड कोर्स ऑन दैट, बट अभी ब्रीफिंग के लिए मैं आपको जस्ट सेकेंड मैं क्विकली बता देता हूँ कि देयर आर सेपरेट टीम्स अमंगस्ट. एक मिनट. आपको मैंने अभी ये बताया तो वैसे ही सर आप रिकेप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा मतलब थोड़ा सर. जस्ट सेकेंड. तो अगर आपको वैल्यूएशन करनी है किसी भी सिक्योरिटी के, बराबर है, तो देयर आर वेरियस थिंग्स. सबसे पहले क्या आता है? आर यू गाइस एबल टू सी माय स्क्रीन? नो सर. No. Okay. Quickly in next 5 minutes we'll wrap up, so I'll just quickly brief you how exactly it works. ठीक है. Hope you guys are able to see my screen. यस सर. ओके. सो बेसिकली क्या होगा, जब भी ट्रेड होगा तो सबसे पहले आएगा मिडल ऑफिस वगैरह सब होने के बाद ट्रेड प्रोसेसिंग टीम. अब ये ट्रेड प्रोसेसिंग टीम क्या करेगी? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग या ट्रेड प्रोसेसिंग बोलेंगे. इसमें आपको ट्रेड, कैश, एफएक्स, डेरिवेटिव्स, ये सब इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस किया जाएगा कस्टडी एंड अकाउंटिंग पे. ठीक है, कस्टडी एंड अकाउंटिंग. अब ये अकाउंटिंग, कस्टडी अकाउंटिंग बुक होने के बाद आपका जो कस्टोडियन ने सॉरी ये ट्रांजैक्शंस बुक होने के बाद आपको उस पूरे पोर्टफोलियो के लिए फंड अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना. उसके पूरे दिन में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, कितना रिडम्पशन हुआ. अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड अकाउंटिंग के लिए हम लोग को क्या जरूरत है? सबसे पहले उसके सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, रिडम्पशन कितना हुआ है ना. उसके बाद उसने फीस कितना दिया है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड ऑल, राइट. तो ये सब एक्सपेंसेस हो गए. अभी इससे पता करेंगे हम लोग कि इस पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन क्या है. तो वैल्यूएशन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा. आर यू गाइस गेटिंग मी? वैल्यूएशन करने के लिए हम लोगों को उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा. हर एक Yes. ट्रांजैक्शन मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में फाइनली मेरे को पता चलेगा कि मेरा सब्सक्रिप्शन, रिडम्पशन, इसमें से मुझे एक बताना कि सिंपल मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि सपोज इन केस आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द कैप स्टॉक, कैपिटल स्टॉक मतलब क्या है, अगर पूछा किसी ने तो क्या बताओगे आप? व्हाट इज द कैप स्टॉक? व्हाट इज द कैपिटल स्टॉक? कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टेबल कैपिटल दैट फंड हैज. इन्वेस्टेबल कैपिटल मतलब क्या है? आपने समझो सब्सक्रिप्शन किया 100 CR और रिडम्पशन किया है 10 CR, तो बचा कितना अपने पास? 90 CR. तो ये अमाउंट जो है वो दैट ऑन गिवन पर्टिकुलर डे यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट. दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टेबल कैपिटल. क्या बोलेंगे इसको? इन्वेस्टेबल कैपिटल. अभी कैपिटल के दो टाइप हो गए. आपने ये देखा रहेगा, एक तो इन्वेस्टेबल कैपिटल हो गया और दूसरा होता है शेयर कैपिटल. अभी शेयर कैपिटल में और इन्वेस्टेबल कैपिटल में डिफरेंस क्या है? सर शेयर कैपिटल मीन्स द टोटल कैपिटल.
Investing capital means like total acquired capital. How much remaining capital is available in the fund? नो 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 नो, ये गलती भी मत करना ऐसे कुछ बोलने के लिए। सबसे पहले याद रखना, शेयर कैपिटल और जो डेट कैपिटल आप लेते हो, ये आप कंपनी के एक्सपेंसेस मेंटेन करने के लिए लेते हो। किसके लिए? एक्सपेंसेस के लिए। हाँ, आप लोगों से पैसा इकट्ठा करते हो तो आप उससे कंपनी के लैंड, बिल्डिंग, टूल्स, मटेरियल्स, वर्किंग कैपिटल के लिए यूटिलाइज करते हो ना, ये कैपिटल, शेयर कैपिटल, Yes. बराबर ना? The share capital and the debt capital are used by the firm for managing expenses in the day-to-day operation. समझ में आ रहा है क्या? ये कैपिटल जो यूज करते हो, ये कंपनी को और ये इन्वेस्टेबल कैपिटल मतलब क्या है? आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, क्या आप वो खर्चा करने के लिए करते हो? No. हाँ, so that capital is collected by the fund manager and invested in somewhere, so that is called a capital stock, cap stock, and this capital is your share capital. So don't get confused, these are two different capitals. ये आप expense के लिए use करते हो, and that investable capital is used to invest into particular fund. Are you guys getting me? Yes, sir. Okay. Then अभी आप मुझे एक बता देना कि फॉर एग्जांपल अगर सब्सक्रिप्शन ये किया, क्या बोलते हैं ना, आपका एनएवी कौन सी चीज बढ़ाएगा? सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन फॉल, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, रिडम्पशन, रिडम्पशन इंक्रीजेस, समझो इंक्रीज होता है रिडम्पशन। तीसरा ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन एंड रिडम्पशन बोथ इंक्रीजेस, एंड एक एग्जैक्ट सेम पोर्शन में, प्रोपोर्शन में हो गया, समझो। और चौथा है सब्सक्रिप्शन इंक्रीजेस। Subscription increases. तो आपका एनएवी इंक्रीज कौन करेगा? व्हेन विल इंक्रीज योर एनएवी विल इंक्रीज? When When the cash is subscription is getting, increases. yeah, when the cash is flowed to our account. राइट, I mean, बिकॉज व्हेन देयर इज अ इनफ्लो इन योर पोर्टफोलियो, बट अगर आपका आउटफ्लो बढ़ेगा तो डेफिनेटली योर एनएवी विल कम डाउन। गेटिंग मी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सब्सक्रिप्शन फॉल्स मतलब आपका पैसा कम आया तो डेफिनेटली उससे आपका एनएवी इंक्रीज नहीं होने वाला। रिडम्पशन इंक्रीजेस मतलब आपके अगर रिडम्पशन बढ़ रहे हैं, मतलब आपके ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पोर्टफोलियो में से पैसा निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली योर एसेट्स विल कम डाउन, राइट? इफ योर Yes, sir. cash will decrease, means assets will come down, then definitely there will be decrease in the NAV. And if subscription, the redemption, both hand in hand increases exactly in the same proportion, definitely it will not increase the NAV. Getting me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And the subscription increases means automatically your cash will increase. Cash will increase means your assets will increase, and this is how your NAV will automatically will get increase. So basically fund accounting में आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि सबके सब फंड्स में, पहली बात तो आपको ये हर एक प्रोडक्ट्स पता होना चाहिए, बेसिक जो मैंने पहले बताया। उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होने चाहिए, उनके फीचर्स पता होने चाहिए। अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, why to calculate the NAV, right? NAV कैलकुलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इफ देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे एनएवी पे इंपैक्ट होगा उसके बारे में बताना चाहिए। आपको कौन कौन से एंट्रीज आप कर सकते हो, कैपिटल कॉल, फीस है ना, कस्टडी फीस, या अलग अलग एक्सपेंसेस होंगे, राइट? वो हो गया। तो वो पर्टिकुलर फंड हाउस कौन सा है, पेंशन फंड है, म्यूचुअल फंड है, हेज फंड है, प्राइवेट इक्विटी है, तो कौन से पर्टिकुलर फंड हाउस के लिए आप काम करते हो, उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन है। आर यू गाइस गेटिंग मी? Yes, sir. Okay. Yes, sir. All Yes, right. sir. So I would, I would like to take a pause here because another batch is there waiting for me. All right. So let's take a pause here. For the next week, I would request you guys to come, prepare all the topics that I had given you. Last time मैंने कुछ questions दिए थे. Do you remember? Everyone must have noted down. Yes, sir. Yes, sir. So I want everyone sir. to just go through all those questions and come, be prepared. So there will, I'll try to, take 1 or 2 more sessions for you guys to, if you guys have any doubts that you want to get it clear, okay? And we will close it, this session very soon, okay? Okay, sir.
Okay, so I will, the next week we will take a pause. If there is any, questions, concerns that we'll have, we will definitely address in the next 1 or 2 session. So I want you guys to come prepared with your own questions, and if you have anything, if you want to clarify any doubts or anything, you can just get in touch with me anytime. Okay. Yes, sir. All right, guys. Thank you very much for time. See you next week. Next to next week. Bye bye. Thank you, Thank you sir. so much, sir.